All right, so it's IR or infrared spectroscopy. We just call it IR as well, infrared spectroscopy and IR. So it's like in the spectrum that we have different type of zones and regions based on the wavelength of the radiation and light, like far infrared, UV, in IR and all, visible region and all. तो उसमें से this topic is about IR, infrared region of the light. और इसका मैं फ़ायदा क्या एंड एवरीथिंग मैं इनको लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ नोट कर लें, फिर एक साथ I'll explain it. So this IR is also used for identifying the structure of an organic compound. Just like mass spectroscopy, even IR is also used to identify or find or determine the structure of an organic compound. And then there is no specific diagram of IR, but I just draw an outline to explain what we do in this topic or technique. तो ये भी आप draw कर लें साथ. But it's like not an actual diagram of the apparatus, it's just an outline of the procedure. So the compound or the sample that you want to find the structure of, we take it here and we just pass IR radiation or beams from it. Those IRs radiation pass from the sample and they fall on a sensor, and then sensor records the radiation and plot them in the form of graph, peaks, inverted peaks, और graph इस तरह का बड़ा weird सा scary graph आपको IR का मिलेगा, but it's much simple than mass spectro. So that's the outline diagram. थोड़ा सा मैं briefly procedure भी लिखूंगा, which as such is not part of our syllabus, but without the diagram and procedure, you really cannot understand what they ask you. उसको भी आप note कर लें, and then all of it I'll explain towards the end then. इसको आपने बड़ा तेज तेज लिखना है, सिर्फ बैठ के स्क्रीन पे देखना नहीं है कि क्या हो रहा है. आप कॉपी करेंगे, नोट्स में ये चीज़ होनी चाहिए, और देन आई एक्सप्लेन इट एंड आई माइट बी इरेजिंग समथिंग टू एक्सप्लेन ऑब्वियसली बिकॉज इस पे स्पेस कम होती है. These different bonds absorb different radiation and show certain movements. The absorptions appear as peaks on graph. And then from peaks, bonds, and structure of compound is determined. So all the working in the diagram as such is not requirement के करते हम क्या है. But I mean, maybe अभी तो ये topic आपको समझ आ जाएगा, but if you revise it after 2 or 3 weeks,
तो you might not simply understand unless you have these points written कि इसमें हमने क्या पढ़ा था. But the next few things that I'll be writing are really important. ये आपको पता होनी चाहिए. As a note मैं इनको अलग से लिख रहा हूँ. And that is number of bonds or number of types of bonds equal to the number of peaks and then broad or wide peak on the graph. That's really important point. In fact, 70% IR के question इसी point पे based है. So broad or wide peak on the graph shows hydrogen bonded compound or hydrogen bonding. And then one type of bond in different compounds form peak at different wave number. अच्छा, अभी मैंने रफली लिखने वाला सारा काम हमारा इसका कंप्लीट है. दिस साइड इज लाइक द प्रोसीजर साइड. ये जो मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे. प्रोसीजर as such is not in syllabus, even the diagram, but this note point and the concept is. So आप लोग इसको नोट कर लें. अभी मैंने कोई एक्सप्लेन कुछ नहीं किया, ठीक है. आप लोग लिख लें, फिर मैं एग्जांपल्स के साथ सारा एक्सप्लेन करता हूँ और देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस. So I'll just wait for 2-3 minutes so that you guys are done writing. All right, I hope आप लोगों ने लिख लिया है. अब the thing is that you need to try and understand for next 5-10 minutes. थोड़ा सा फोकस करेंगे तो समझ आएगी. क्लास में तो आप लोग सामने होते हैं. Don't let you write at this stage. But again, IR is relatively much easier than mass spectrometry. No peaks and all such kind of details or ratios and stuff, but it's another technique. और इतनी आसान भी नहीं है. अगर आप इसको सही से समझेंगे नहीं तो बुक से नहीं समझ आएगी. तो अब आपने थोड़ा सा फोकस करना है. लेट मी एक्सप्लेन ऑल दिस एंड देन मे बी यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. I might need to use this left side space. इस पे प्रोसीजर लिखा हुआ है which is as such not part of our syllabus. Okay, so see what scientists do is like if they want to know, find out the structure of an organic compound. So they have multiple techniques, and IR or infrared spectroscopy is one of those techniques. In fact, it's not a very like reliable or advanced technique as such compared to mass spectrometry. And another one, the most authentic, is this NMR, nuclear magnetic resonance. वो A2 के syllabus में, AS में नहीं है. Like still, for a compound, what scientists do is like they perform multiple techniques. They perform mass spectrometry also. They use IR, फिर वो NMR भी करते हैं. And then if the results of all the techniques confirm that the structure of this compound is this,
लाइक सारों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो ही वो कहते हैं कि जी ये कंपाउंड कोई एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, whatever. So only then that compound can be verified. So mass spectrometry में the one that we done yesterday, what they do is like they bombard the compound with electrons and that turns into fragments, and then fragments form peak on the graph, और fragments के थ्रू आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता करते हैं. आईआर में, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, देयर इज इंटायरली डिफरेंट रैशनल, और वो ये है. अब यहाँ से इसको समझना है. लेट्स से कि अगर मेरा कंपाउंड वाज सिंपल अल्कोहल, स्मॉलेस्ट अल्कोहल, methanol. So I didn't know okay it's methanol. I mean I can know okay it's an alcohol quite easily. I can just simply put PCl5 in it, और अगर इसके white fumes बने तो I would know कि it has OH group in it. फिर अगर ये अल्कोहल है तो भी मैं चेक कर सकता हूँ by oxidizing it. ठीक है. और इवन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तक का भी पता चल जाता है, ऐसा मसला नहीं है. लेकिन व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ द अल्कोहल, हाउ मेनी ब्रांचेस डज इट हैव, ये सारी डिटेल्स पता करने के लिए फिर हमें ये टेक्निक्स चाहिए. सो what happens in this technique is that they put this compound in place of sample here, और उसमें से IR रेडिएशन पास करते हैं, इंफ्रारेड रेज पास करते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज के किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जो एटम्स होते हैं when they're bonded, तो डिफरेंट बॉन्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. मतलब बॉन्डिंग करने के बाद भी the atoms are not sitting still and watching each other. They have different types of movements, और वो movements होती हैं कि the atoms are could move to and fro, like अपने mean point के ऊपर आगे पीछे इस तरह left right to and fro move करते रहते हैं, outward like that. एक इधर shift हो रहा है, एक इधर जा रहा है. Bond does not break, but the atoms sort of vibrate, or they could have some twisting movement, like एक इस तरह से clockwise twist कर रहा है, एक anti clockwise twist कर रहा है. Bond के ऊपर sigma bond पे the atoms keep on flipping and twisting in the bonded state. And then very important movement is bending movement. Like bonded state में the bond bends upward and downward, like up and down bend हो रहा होता है. So what you need to understand is that even in the bonded state, the atoms or bonds do have certain movements: bending, twisting, rotational movement, and all these movements come from specific energies, and all those specific energies come from the IR region of light, infrared region से आती हैं. So organic compound में जो bond की movements हैं, they come from infrared region of the light. So scientists use it as an advantage, and to check the structure of a compound, they pass IR radiation from the compound. तो उससे क्या होता है कि जो भी different types of bonds हैं, जैसे methanol में आप देखें, it's not a big molecule, and it has three types of bonds. इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, थ्री ऑफ देम. फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये वाला. एंड देन वी हैव ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. So these three different types of bonds have different movements, and all the movements will be done by these bonds after absorbing energy from IR radiation region. लेकिन इन सब की जो absorptions हैं वो different wavelength और wave number के हिसाब से होंगी energy की. So when you passed IR radiation from this sample, these bonds absorbed energies, and after passing through the sample, the IR radiation like are caught upon the sensor, and sensor records के जी कहाँ पर कितनी absorption हुई है, and it actually plots the graph of absorption for us, and you people get this graph in exam, and you get to answer the questions from that. अब मैं थोड़ा सा उसकी तरफ आता हूँ. यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है. नेचुरली क्लास में तो बोर्ड पे लिखे रहते हैं, पॉइंट से रेज नहीं करता मैं, लेकिन मैं अब इसको रेज करने जा रहा हूँ. दिस पॉइंट, and I said case the most important one is कि broad or white peak indicate compound having hydrogen bond, like methanol is an alcohol and it can make hydrogen bond. तो जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके ग्राफ पे वी वुड सी अ ब्रॉड वाइड पीक इस तरह की. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बस आपने माइंड में रखना है. आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट कि what does it mean and all, लेकिन इसकी रीजंस हमारे सिलेबस में नहीं है कि why the peaks get broad or short and thick and thin and all. इसको थोड़ी देर के लिए आप माइंड में रखेंगे. अच्छा, what happens is कि
when the IR radiations pass through the sample and then they fall on the sensor, sensor हमें graph बना के देता है. The graph of IR is quite interesting. In fact, it's inverted upside down. Y-axis पे percentage है, absorption transmittance में लिखा होता है, and it's typically from 0 to 100 on that side. X-axis पे it's wave number, और ये भी wave number भी increases towards the origin from 0 till roughly 4,000 ये है. So it's like 3,000, 2,000 and 1,000 and 0. So the reason for that is that the peaks that we get are like inverted, and it's easy to read the inverted peaks. उल्टी जो peaks बनी होती हैं. You might get a straight graph as well, लेकिन जो conventional graph है IR का वो inverted ही है. और अभी तक past papers में inverted graphs ही दे रहे हैं, like percentage increasing towards origin and wave number increasing towards origin. अच्छा, अब होगा क्या कि all these different bonds, like you got three different types of bonds, so we'll be getting three different peaks on the graph, uh, like this. I'm just posing it. अच्छा, अब the thing is कि आपने about 2000 तक का जो region है from 0 to 2000, इस region को ignore करना है. So just simply ignore the peaks formed in this region, because organic compounds की जो peaks, important peaks हैं, they come from 2000, sometimes they write 1500. 2000 से 4000 के range में सारी important peaks आती हैं. So up to 2000, all the peaks formed are not by any significant bond or compound. In short, आपने 1500 और 2000 तक के जो region की peaks हैं उनको ignore करना, उस पे नहीं जाना. And then maybe if these peaks were labeled as X, Y and Z, और एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि जी ये जो कंपाउंड था मेथनॉल, इट हैज़ थ्री बॉन्ड्स CH CO and OH, तो इसमें से वो आपसे पूछ सकता है कि विच पीक इज फॉर OH बॉन्ड. तो अभी एक पॉइंट मैंने लिखा था, रेज भी कर दिया. कुड यू ट्राई एंड टेल मी कि विच ऑफ दीज थ्री X, Y and Z peak is made by Y, OH? Y peak, that Y. is, it's broad and stretched, right? So अभी आप I would strongly recommend कि जो latest papers हैं, उन पेपर टू स्पेशली, उसमें अगर आप देखेंगे ना, ऑनलाइन भी देखेंगे या अदरवाइज, you'll find last typically last question from IR portion, उसमें 5-6 मार्क का भी आ चुका है, अदरवाइज 2-3 मार्क का ही आता है. उसमें you'll see that most of the questions are based on this broad peak concept. तो ये तो आप बता सकते हैं कि जी OH की पीक, ब्रॉड पीक किसकी है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले की. Then for X and Z, you just need to read the wave number here. Z का wave number ये, and then there is this data booklet जो अब नहीं है, but data booklet का एक पेज है, टेबल है पूरा, उस पे we have these bonds here और इधर wave number लिखे हुए. So दो that table will actually give you exactly the type of bond and the wave number at which that bond would form the peak. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3800 पे आ रही है, OH की मैं सपोज कर रहा हूँ 3000 पे, और CH की लेट से 2300 पे. So when I have the compound, when I have the bonds with me, I have the table from the data booklet, and I see the peaks. I'll just take the reading from for the wave number, and I'm supposed to explain that which peak is for what bond. तो आप रेफर करेंगे डेटा बुकलेट को. इन एग्जाम नाउ डेटा बुकलेट इज नॉट देयर. तो अभी जो लास्ट ईयर के दो पेपर्स मैंने देखे हैं उसमें दे हैव गिवन यू दिस टेबल इन द क्वेश्चन ऑलरेडी. तो फिर आपने बताना है कि जी पीक एट wave number of 3800 is because of CO bond, and the peak at wave number 3000 broad peak is because of OH, and CH की जो peak है roughly at 2300. एग्जैक्ट नहीं है, एक रेंज आपने बतानी होती है 100 to 200 की रेंज में. So that's one typical question from IR. I'll just quickly recap it, और फिर यहाँ तक आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है पूछें, फिर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ. So IR is a technique which is used to identify, find out the structure of an organic compound. And how can we do that? An organic compound having different bonds have different type of movements depending on different energies they have. The energies taken up by the bonds
come from the IR region of the light. So scientists would pass IR radiation from a compound जिसका आपने structure पता करना है. These bonds become happy when they see their radiations and they absorb those radiation and do their movements. And then after passing through the sample, the IR would fall on the sensor, and sensor will tell us what sort of absorption and how much percentage absorption would take place at what number, wave number. और उसको वो ग्राफ पे प्लॉट कर देता है. 2000 तक के रीजन की पीक्स को हम इग्नोर करते हैं. बाकी पीक्स जो एग्जामिनर आपसे पूछे आपने वो आइडेंटिफाई कर देनी है. और द टेबल गिवन इन द क्वेश्चन और डेटा बुकलेट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट के किस वेव नंबर पे कौन सी पीक किस बॉन्ड की है. And the most important point is that a broad, wide, chody peak would be by the compound or the bond involved in hydrogen bond. Achha, one more thing and then you can ask question. It's just like when you go to make your ID card, नादरा के पास आप जाते हैं वो आपके थंब प्रिंट्स लेते हैं फिंगर प्रिंट्स लेते हैं. Or you go for a passport or maybe like you go for a to a bank for an account opening. They take your biometric, right? So when you put your thumbprint on the biometric machine or thumb on that, so it actually brings up the entire data that is stored in the Nadra database for you. Similarly, the IR of a compound makes a very special fingerprint of that compound on the IR. And that fingerprint of different peaks does not match with any other compound. मतलब जो एक कंपाउंड का आता है पीक्स का पैटर्न वो किसी और कंपाउंड से मैच नहीं करता. सो IR इज रादर अ टेक्निक विच इज डन बाय साइंटिस्ट फॉर एवरी कंपाउंड डिस्कवर्ड. मतलब जो भी नया कंपाउंड डिस्कवर होता है केमिस्ट्री में उसका वो IR रन कर लेते हैं और उसका जो पीक का पैटर्न है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है. Now, if you, for example, bring me a compound and you ask me what sort of compound is this, तो मैं सिंपली उसको IR में रन करूंगा और IR के डेटाबेस में अगर वो पहले से स्टोर है तो वो उससे मैच करके क्विकली मुझे बता देगा कि जी व्हाट कंपाउंड इज दिस. जस्ट लाइक आपका डेटाबेस नादरा के पास स्टोर है, आप थंब रखते हैं उस पर और आपका सारा डेटा सामने आ जाता है. सो इट्स लाइक मोर लाइक a technique which has stored information about compounds and it matches them with the sample given to you. इस तरह से कंपाउंड का पता चलता है हमें मोस्टली. तो स्टेज तक कोई क्वेश्चन है? फातिमा ने शायद पूछा था. क्वेश्चन पूछा लेकिन थोड़ा लाउड और जरा माइक के पास होके बोलना बेटा, मुझे आपकी आवाज नहीं आती. जी सर. सर 0 से 2000 वेव नंबर तक कोई क्वेश्चन आ सकता है? 0 to 2000 के रीजन में कोई इंपॉर्टेंट पीक्स नहीं है तो क्वेश्चन क्यों पूछेंगे वो. ओके ये सर. पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं व्हाई डू वी इग्नोर दिस रीजन. So you'll say this region does not have any major peak or peak formed by any important bond or significant bond. तो इसलिए हम उसकी तरफ नहीं जाते. ओके सर. थैंक यू. Anyone else having a doubt till now? पूछ लें फिर मैं एक दो एग्जांपल आपको और बताता हूँ इसमें. Sir, isn't CO bond polar as well? So won't we consider its peak, the broad one? I never said a polar bond would make a broad peak. I said a bond which is involved in a hydrogen bond only will make a broad peak. And CO bond is polar, but it's not involved in hydrogen bond as such. I mean, hydrogen bond करने के लिए oxygen attached on the hydrogen side would actually participate in hydrogen bond with the other OH bond. ये आगे ऑक्सीजन के साथ किसके साथ अटैच है वो नहीं. I mean, a CO bond cannot make a hydrogen bond with another CO bond. So no, इनकी peak broad सर नहीं है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फिर कंडीशंस फुलफिल नहीं होती. कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. और आई मीन अगर ये ग्राफ आपको मिल जाए और ये इसी तरह के एग्जामिनर आपको क्वेश्चन भी दे रहे हैं कि let's say you got maybe two compounds given in question. These are the things they have been asking in MCQs already. So there is this compound CH3COCH3, and there is this CH3CHO, and then there is this CH3COOH. And then we have the IR graph given for the compound
like only one graph is given and there are three compounds, 1 2 3, and the graph looked like this. अब इधर वेव नंबर है और इधर जो है वो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्प्शन कह लें, कुछ कह लें। अब इसमें बहुत सारी पीक्स हैं, मे बी टिल दिस रीजन इट्स 2000 और इसको आप इग्नोर कर दोगे, लेकिन दीज आर लाइक द मेन पीक्स। बाकी छोटी छोटी पीक्स के पीछे हम नहीं जाते। 1, मे बी 2, 3 एंड 4 आर द मेक डीप पीक्स। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है इसमें। क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा कि जी विच ऑफ दीज कंपाउंड्स कुड नॉट फॉर्म दिस ग्राफ। इन तीनों में से किसका ये ग्राफ नहीं हो सकता? तो Sir, 1. 1 का नहीं हो सकता, क्यों? Sir, it's a ketone. इसमें OH का कोई bond नहीं है. 3 कंपाउंड 3 का ये ग्राफ नहीं हो सकता बेटा। इसमें देखो कोई ब्रॉड पीक तो नहीं नजर आ रही ना, मैंने सारी शार्प पीक्स बनाई है। ब्रॉड पीक इज लाइक अ वाइड बिग पीक लाइक दैट, ठीक है, ये ब्रॉड पीक है। तो मैंने आई हैव नॉट ड्रॉन अ ब्रॉड पीक फॉर अ ग्राफ, सो अगेन यू नीड टू ट्राई एंड थिंक कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा, सॉरी कर सकता है। तो ethanoic acid is a carboxylic acid and that can obviously form hydrogen bond. So if I would have a graph of ethanoic acid, I must get a broad peak for that, so which I don't see on this graph. So compound 3 का ये graph नहीं हो सकता। Whereas ketone and aldehyde प्योर फॉर्म में तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे ना, बिकॉज उनकी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। We don't see a hydrogen directly attached to oxygen in case of first Sir, and आप second। question repeat करेंगे? अब तो बड़ी देर हो गई। क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो ग्राफ है दिया मैंने, विच ऑफ दीज थ्री कंपाउंड्स कैन नॉट फॉर्म दिस ग्राफ। आई मीन ये तीन में से किसका ग्राफ नहीं हो सकता इन शॉर्ट? तो उसका नहीं हो सकता ना Okay, sir. जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इथेनोइक एसिड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सो इट शुड नॉट हैव अ ग्राफ लाइक दैट। इट मस्ट हैव अ ग्राफ विद वाइड पीक इन इट, जैसे लास्ट टाइम मैंने ड्रॉ किया था। तो इसका थर्ड का Okay, नहीं sir. है। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड में से किसका है, आई कांट टेल दैट, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड में से किसका है, इसको बताने के लिए आई नीड दैट टेबल ऑफ द डेटा बुकलेट जिसमें सारे बॉन्ड्स दिए हुए हैं। तो उसमें वो आपको बताएगा कि जो कीटोन का सी डबल बॉन्ड हुआ है अटैच्ड विद कार्बन, और एल्डिहाइड का जो कार्बन है, इनकी पीक्स कहाँ आती हैं। अब देखो अपेरेंटली दिस इज कार्बोनिल कार्बन एंड दिस इज कार्बोनिल कार्बन, लेकिन जो कीटोन का कार्बोनिल कार्बन है उसकी पीक एक डिफरेंट वेव नंबर पे आएगी, एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन की पीक डिफरेंट वेव नंबर पे आएगी। तो वो जो पॉइंट्स मैंने लिखे थे उसमें आई रोट दिस पॉइंट के सेम बॉन्ड लाइक CO डबल बॉन्ड सेम है, लेकिन कीटोन में और एल्डिहाइड में वो डिफरेंट जगहों पे है। इनकी पीक्स जो है वो नेचुरली डिफरेंट पोजीशंस और वेव नंबर पे आएंगी। सो फ्रॉम द डिफरेंट पोजीशन एंड वेव नंबर you can tell which compound would form that peak or otherwise। तो ये वो पॉइंट था जो मैं बता रहा था अभी आप लोगों को इसमें। एक एग्जांपल आप और बेशक मेरे साथ इसमें ट्राई कर लें। Okay, so let's say we had again a graph given for a compound, and the graph of IR maybe looked like this. And there are like 2 or 3 compounds given. And the first one is ethyl bromide, then we have this propane, then we have ethanol, and then we have ethanoic acid। अब मुझे बताएं कि which of these 4 compounds can make this graph or can show this graph? Sir, C and D.
सी और डी का ग्राफ ये बन सकता है, ठीक है। देखो ये ब्रॉड पीक जो नजर आ रही है ना हमें, वाइट एंड चौड़ी वाली, दैट इज मेड बाय अ कंपाउंड विच कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल्स कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, carboxylic acids can show hydrogen bonding, whereas halogen alkane and alkane purely do not have hydrogen bond। तो ये तो कंफर्म है कि ए और बी का नहीं है। अब सी और डी में से किसका है, इसके लिए अगेन you'll have that टेबल, और आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि OH बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड और OH बॉन्ड इन अल्कोहल की पीक कौन से वेव नंबर पे है। तो उसको देख के यू कैन इवन पिक योर करेक्ट ऑप्शन कि किस कंपाउंड का ग्राफ मिल सकता है। तो अब इसमें अगेन एज आई सेड के अपेरेंटली ये टॉपिक आया था 2016 में, बट वी डिडंट हैव टू मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। इनिशियली कुछ एमसीक्यूज आए थे, but now roughly in every paper we see a question for 2 3 4 marks even in paper 2. See, mass spectroscopy is added last year, and I think the way examiners ask question from techniques in A2, they mix up two techniques and ask question. तो अब मुझे लगता है कि आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पे they will put up a question from mass spectro and IR, मतलब उस एक ही कंपाउंड का they'll give you mass spectrometry graph and IR graph। तो अगर तो ये टेक्निक्स आप लोग थोड़ा तैयार करके जाएंगे तो दोज क्वेश्चंस विल बी इजी एंड मार्क्स स्कोरिंग फॉर यू। लेकिन अगर आपने इनको छोड़ दिया तो अगेन ये टॉपिक आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इनको अटेम्प्ट करें। व्हाट हैपेंस इन IR में एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑन द ग्रुप आफ्टरवर्ड्स। नोट्स में लिखना भी है, रिकॉर्डिंग भी देखनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें जो फ्रेश पेपर्स के आए हुए हैं, सबसे बेस्ट हुआ। So IR में साइंटिस्ट एक्चुअली पास IR रेडिएशन फ्रॉम द कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम इससे पता करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैव डिफरेंट मूवमेंट्स एंड दे absorb certain radiation and they perform certain movements. So when you pass IR radiation from the compound, it actually each bond absorb its own IR radiation, and that is plotted as a peak on graph against different wave numbers। बाकी मैंने बताया कि जो ब्रॉड पीक है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कंपाउंड्स की है। फिर 2000 तक के रीजन की पीक्स को हम इग्नोर करते हैं, उसमें कोई सिग्निफिकेंट बॉन्ड की पीक नहीं आती। फिर यू गेट द टेबल एंड इंफॉर्मेशन इन द डेटा बुकलेट इन क्वेश्चन which tells you कि किस वेव नंबर पे कौन से बॉन्ड की पीक है। The question from IR looks quite scary to be honest। I mean उसमें एक बड़ा सा ग्राफ और नीचे टेबल और वेव नंबर और सारा, बट जब बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं तो वो कहते हैं सर इसमें ये आसान है, मतलब मोस्टली ये ब्रॉड पीक ही पूछ रहे होते हैं वो। तो ये है जनाब IR। तो अब कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, पूछ लें। आई नॉट पुल इट फर्दर इनटू इट, क्योंकि अब और इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। अब हमारे Sir, can you explain the first number of types of bonds is equal to number of peaks? जितने डिफरेंट बॉन्ड्स हैं वो उतनी एब्जॉर्प्शन करेंगे ना डिफरेंट। तो डिफरेंट बॉन्ड्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो ग्राफ पे पीक्स बनाएंगी। तो जितने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं उतनी पीक्स बनेंगी ग्राफ। अच्छा, हमारा नाइट्रोजन सल्फर का जो टॉपिक और कॉन्सेप्ट रहता है वो अब मैं उसके आपसे PDF शेयर करूंगा प्रॉब्ली कल, और मोस्ट प्रॉब्ली कल नहीं तो सैटरडे को अर्ली टाइम में क्लास होगी, मे बी 10 11 o'clock और समथिंग, लेकिन आई पोस्ट इन द ग्रुप क्वाइट इन टाइम। यस फातिमा, यू हैड अ क्वेश्चन, पूछ लें। सर अगर क्वेश्चन में हमें एक डायल दिया तो ग्राफ में दो दो वाइट पीक्स आएंगी। हाँ, अगर आपके पास एक डायोल है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सी, अगर मेरे पास एक डायोल है तो उस डायोल की सिचुएशन फर्क हो सकती है। आई मीन आई कुड हैव अ वेरी सिंपल डायोल लाइक दिस। सो दिस OH bond is attached with CH2, and this OH bond is attached with CH। So these two OH groups will form maybe two broad peaks at two different points, wave numbers। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो टेबल में आपको बताया होगा कि जी OH बॉन्ड अटैच्ड विद CH2 एंड CH कहाँ कौन से वेव नंबर पे वो पीक बना रहा है। बट अगेन डोंट एक्सपेक्ट टू ब्रॉड पीक्स फॉर अ कंपाउंड गिवन लाइक दैट। आई मीन एग्जामिनर की मर्जी है कि वो दो में से एक पीक बना के दिखाए आपको, और एक भी ना दिखाए, they do certain things at time that as teacher we don't expect। इस कंपाउंड का जो IR ग्राफ है उस पे दो ब्रॉड पीक होंगी वाइड वाली, लेकिन हो सकता है वो दो में से एक दिखा दे
जस्ट टू कंफ्यूज यू। लेकिन जो एक आपको पीक नजर आएगी उस पे आपको बस देखना है कि किस वेव नंबर पे और वो विच बॉन्ड दैट कुड बी। और अगर वो ब्रॉड पीक ना ही दिखाए आपको तो फिर आप क्वेश्चन पड़े, हो सकता है वो आपसे कुछ पूछ रहा हो। आई मीन इफ आई ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस कंपाउंड एंड इंस्टेड ऑफ टू ब्रॉड पीक आई डोंट सी एनी पीक एट ऑल, ब्रॉड पीक, वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट्स रॉन्ग इन दिस ग्राफ, तो यू शुड से ब्रॉड पीक इज मिसिंग इन दिस ग्राफ, which should be by the OH bond. Anyone else? Sir, will चलें, there be different pin numbers for every CH bond? every CH, For every similar bond? हाँ सिमिलर बॉन्ड की पीक्स डिफरेंट वेव नंबर पे होंगी, ये मैंने इससे पहले पॉइंट में लिखा। एग्जैक्टली exactly. चलो दैट वुड बी ऑल। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, उसको आप देख लें बाद में। और अब नाइट्रोजन सल्फर हमारा रहेगा, दैट विल कंप्लीट द सिलेबस देन। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। Professor. अल्लाह हाफिज।